Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to study and discuss reproduction in fungi. So, how fungi reproduce. Today we are going to study and discuss reproduction in fungi. Generally, vegetative, sexual, and sexual modes of reproduction are recognized in fungi. So, generally, fungi reproduce by vegetative mode of reproduction, asexual mode of reproduction, and sexual modes of reproduction. So, generally, three modes of reproduction are recognized in fungi. These are vegetative, asexual, and sexual modes of reproduction. So, first of all, we take an account of vegetative reproduction. The common methods of vegetative reproduction in fungi are fragmentation. The body is divided into fragments. So the mycelium is divided into smaller parts, and each smaller divided part is called fragment. So the body is divided into fragments. Each fragment grows into a newly individual. Each fragment grows into a newly individual. This type of reproduction is found in most of the filamentous, ascomystes, and basidiomystes. So, माइसीलियम जो है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और ये जो स्मॉलर पीसेस होते हैं इन्हें फ्रैगमेंट्स कहते हैं. हर फ्रैगमेंट ग्रो करता है और उससे न्यू इंडिविजुअल जो है वो अराइज करता है, न्यू माइसीलियम बनती है. और ये जो रिप्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फिलामेंटस, एस्कोमाइस्टीज एंड सीडियोमाइस्टीज. On number two, there is fission. The somatic cell splits into two daughter cells by formation of a constriction or a transverse wall. What happens in fission? That there is a somatic cell, and it divides or splits into two daughter cells. And how this occurs? It occurs by the formation of a constriction or a cross wall, transverse wall, uh, in the somatic cell. So this transverse wall or constriction results in the formation of two daughter cells. The nuclear division is mitotic. This type of vegetative reproduction is found in yeast, budding. In this method, a small outgrowth called bud is produced. The nucleus of the parent cell divides, and one of the daughter nucleus migrates into the bud. The bud is separated from the parental cell by the formation of a septum. अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ या प्रोड्यूस होती है जिसे बड कहते हैं, और जो पेरेंट सेल होता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं. तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो बड में माइग्रेट करता है. द बड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सेप्टम. एक सेप्टम बन जाता है पेरेंटल सेल के पर, और पेरेंटल सेल जो है उसमें सेप्टम बढ़ने से बड जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंटल सेल. The bird separates from the parental cell and becomes an independent individual. ये आज़ाद इंडिविजुअल बन जाता है. The budding is common in yeasts, Saccharomyces. तो ये Saccharomyces yeast में common है. In some cases, the birds do not separate and form chains of cells called pseudomycelium. बास ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें ये सेपरेट नहीं होते और चेन्स ऑफ सेल्स बनाते हैं जिन्हें सूडोमाइसिलियम कहते हैं. इसके बाद है स्क्लेरोशिया एंड राइजोमोर्स. These are modifications of hyphae which are resistant to the unfavorable conditions and may remain dormant for longer periods and germinate on the return of favorable conditions. Sclerotia and rhizomes we also studied earlier that these are the modifications of hyphae, modifications of fungal hyphae, and these are resistant to the unfavorable conditions. Uh, they remain dormant for longer periods during unfavorable conditions and germinate on the return of favorable conditions.
So it was vegetative reproduction. Now we study asexual means of reproduction, asexual modes of reproduction, asexual reproduction. The most common method of asexual reproduction in fungi is by means of asexual spores. So जो सबसे आम मेथड है फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करना. Asexual reproduction occurs normally under conditions that favor growth and where and several generations may be produced in one season. So asexual reproduction जो है ये आम तौर पर जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में होती है, ऐसी कंडीशंस में होती है जो कि ग्रोथ को फेवर करती हैं और कई एक ही सीजन में कई जनरेशन जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. Following are the various methods of asexual reproduction in fungi. Arthrospores. So first of all, we will study arthrospore. The hyphae break up into their component cells that behave as spores. So hyphae होते हैं और वो component cells में breakup हो जाते हैं और spores के तौर पर act करते हैं. हमें मालूम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं. तो हाइफी जो है वो ब्रेकअप हो जाती हैं इनटू देयर कंपोनेंट सेल्स, जो उनको बनाने वाले सेल्स थे वहां से ब्रेक डाउन होते हैं और स्पोर्स के तौर पे काम करते हैं. दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज एथ्रोस्पोर्स और आर्थ्रोस्पोर्स, इनको आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं. नंबर 2 पे है क्लेमाइडोस्पोर्स. If the cell becomes enveloped into wall before their separation from each other, they are called as clematospores. Clematospores. अगर ऐसा हो कि जो सेल वो इन्वेलप्ड हो जाए इनटू वॉल सेपरेशन से पहले एक दूसरे से, तो इन्हें क्लेमेटोस्पोर्स कहते हैं. इसके बाद स्पोर्स हैं. व्हेन द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम देन इट इज कॉल्ड एज स्पोर्स. अगर ये स्पोरेंजियम के इनसाइड में बनते हैं, उसके अंदर बनते हैं, तो इन्हें स्पोर्स कहते हैं. द स्पोर्स बियरिंग ब्रांच इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर. तो वो ब्रांच जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं. कोनिडिया हैं. If the spore-like structure produced externally in the form of chain, then it is called as conidia. Spore-like structures होते हैं लेकिन चेन की फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कोनिडिया बने हैं, चेन की फॉर्म में होते हैं तो इन्हें कोनिडिया कहते हैं. द कोनिडिया बेयरिंग ब्रांच इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर. और ये ब्रांच जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं तो इन्हें कोनिडियोफोर कहते हैं. Zoospores. The motile spores are called as zoospores. These are the motile spores and these are known as zoospores. They use flagella for their motility. Planospores. The non-motile spores are called as aplanospores. Non-motile spores are known as aplanospores. And the third mode of reproduction that is present in fungi is the sexual reproduction. The sexual reproduction in fungi involves fusion of two compatible nuclei. So, sexual reproduction involves fusion of two compatible nuclei. The process of sexual reproduction consists of three distinct phases. Uh, plasmogamy. Plasmogamy involves the fusion of protoplasts to bring the nuclei together. So plasmogamy means fusion of protoplasts. Karyogamy involves the fusion of the nuclei followed by meiosis, which restores the haploidy. So karyogamy means the fusion of nuclei, and this is followed by meiosis, that what are sex organs. The fungal sex organs are called the gametangia. These may be similar morphologically, which are known as isogametangia, or differ from each other, heterogametangia. In later case, the male gametangium is called an antheridium. The male gametangium is called an antheridium, and its plural form is antheridia. And the female gametangium is called the oogonium, and its plural form is oogonia. The male gametes are termed anthrozoids and the female gametes the eggs. Methods of sexual reproduction in fungi. The compatible nuclei are brought together by any one of the following methods during sexual reproduction. These methods are often referred to as methods of sexual reproduction.
सो मैकेनिज्म क्या है कि कंपैटिबल न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं या उनको एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो सेक्शुअल प्रोडक्शन के दौरान। और ये मेथड्स हैं इसके लिए। सबसे पहले है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गैमीट्स। दो गैमीट्स होते हैं तो उनके दरमियान सेक्सुअल फ्यूजन होती है। बोथ और वन ऑफ दिस गैमीट्स में बी मोटाइल। दोनों गैमीट्स या मोटाइल हो सकते हैं या एक गैमीट मोटाइल होता है तो इसे प्लेनोगैमीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन प्लेस्मोडियोफोरा। और नंबर टू पे है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। In this type of sexual union, the two gametogenea of opposite sex come in contact with each other and the male nuclei migrate into the female gametogenea. So what happens here? The two gametogenea of opposite sexes come in contact with each other and the male nuclei migrate into the female gametogenea. This migration is brought about either by development of a pore or by dissolution of wall of contact. For example in Penicillium and Aspergillus, or by the formation of a fertilized tube as in Pythium, albugo and Pronospora. So there might be a pore or dissolution, and this type of reproduction is present in Penicillium and Aspergillus, or a fertilization tube is formed as in the case of Pythium, albugo and Pronospora. Gametogennial copulation. In this type of sexual fusion, the entire contents of one gametogennium are transferred to the other compatible gametogennium through a pore, and it occurs in rhizopus and mucor. On the number four, there is spermatization in some ascomystes, neurospora, and other fungi. Minute uninucleate spore-like male structures called spermatia are produced. There are some ascomyces, for example Neurospora and other fungi. Minute uninucleate spore-like male structures called spermatia are produced. The spermatium attaches itself to the trichogyne of female and the wall of contact between the two dissolves. So spermatium are attached. They attach themselves to the trichogyne of female reproductive organ and the wall of contact between the two dissolves. The male nucleus migrates into the female gametogennium and fuses with the female nucleus to form the zygote nucleus. This type of sexual fusion is called spermatization. Number five, smatogamy. In some fungi, for example in Morcilla, the sex organs are not produced and the sexual fusion is brought about by the fusion of two somatic hyphae of different species. So in Morcilla, no sex organs are produced and the sexual fusion is brought about by the fusion of two somatic hyphae of different species. This type of sexual fusion is called smatogamy. Uh, there is a short note on parasexuality. Some fungi do not go through a true sexual cycle but derive benefits of sexuality through parasexuality. सो कुछ फंजाई होते हैं उनमें ट्रू सेक्सुअल साइकिल तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो एक और प्रोसेस में चले जाते हैं और सेक्सुअलिटी के जो तमाम बेनिफिट्स हैं उनको हासिल होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, अदर यानी कि कोई और सेक्स ये कि कोई डिफरेंट मेथड है। During this process, plasmogamy, karyogamy, and haplodization takes place as in a true sexual cycle, but not at specified time or at specified points during the life cycle. So what happens during this process? Plasmogamy, karyogamy, haplodization occurs, but there are no specific time or specific points for these events to occur during the life cycle. Parasexual cycles are found in Deuteromycotina in which the sexual production is absent. So these parasexual cycles are found in Deuteromycotina. The sequence of events involved in a complete parasexual cycle include, so
नंबर वन पे है द फॉर्मेशन ऑफ अ हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम by somatic hyphae of different genetic constitutions, followed by the division of vara nucleus and spread of daughter nuclei through the mycelium. So, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम बनता है। वो कैसे बनता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज के सोमैटिक हाइफी होते हैं, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के सोमैटिक हाइफी होते हैं, तो उनकी फ्यूजन से बनता है। देन इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ फारा न्यूक्लियस। जो फारा न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड स्प्रेड ऑफ डाटा न्यूक्लियाई थ्रू द माइसीलियम, और जो डाटा न्यूक्लियाई होते हैं वो माइसीलियम में स्प्रेड कर जाते हैं। नंबर टू पे है कैरियोगेमी। इट इज द फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स एज वेल एज बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द सेम टाइप। तो ये फ्यूजन है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन है जो कि डिफरेंट जीनोटाइप्स या बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द सेम टाइप ही होता है, रिजल्टिंग इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसके नतीजे में हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई साइड बाय साइड विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अच्छा, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो है वो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की। इट वुड रिजल्ट इन न्यू रिकॉम्बिनेशंस एंड तो जब माइटोटिक मियोटिक क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है न्यूक्लियाई की, तो उससे जो है न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यहाँ पे आपने मियोटिक कर लेना है बिकॉज मियोसिस में न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस विच जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस डिप्लॉयड माइसीलिया। कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है और ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं और डिप्लॉयड माइसीलिया बनाते हैं। Some diploid nuclei undergo haploidization and produce haploid conidia. So it was parasexuality. Today we studied reproduction in fungi. Tomorrow we will study life cycles in fungi. अच्छा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ें समझें। आपके क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट्स में सेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है तो इसके लिए भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और 2 मई से हमारा जो है वो बॉटनी और बायोलॉजी लेक्चरशिप और जोलॉजी लेक्चरशिप के लिए ग्रुप्स भी शुरू हो रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। इसके जो चार्जेस हैं मंथली दे आर 1000 रुपीज़। तो एक मंथ के जो चार्जेस है वो 1000 है और 1 सब्जेक्ट प्रिपरेशन। तो जो एस्पायरेंट्स हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये एक सेशन है जो कि बेसिकली 4 मंथ सेशन है, यानी कि 120 डेज सेशन है। इसमें आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे, डिस्कशन भी होगी, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे और आपको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। तो ये एक सुनहरी मौका है, तो प्लीज़ आप इसको ज़ाया ना करें और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।